हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड स्पीक। आज हम पढ़ेंगे वर्ड स्पीक। वर्ड स्पीक का मीनिंग होता है बोलना। वर्ड स्पीक का मीनिंग होता है बोलना। और वर्ड स्पीक पे तो वर्ब इस्तेमाल होता है। अब हम पर वर्ब स्पीक की वर्ब की फॉर्म्स चेक कर लेते हैं। और इसकी वर्ब की फॉर्म्स हैं V1 स्पीक, V2 स्पोक, V3 स्पोकन, V4 स्पीकिंग, V5 स्पीक्स। V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी और इट के लिए इस्तेमाल होती है। और अब हम देख लेते हैं वर्ड स्पीक का वर्ब की फॉर्म्स। और इसकी वर्ब की फॉर्म इसकी अब हम देख लेते हैं वर्ड स्पीक की यूज़। वर्ड स्पीक का यूज़ है ही स्पीक्स इंग्लिश, he has spoken English, he is speaking English, he has been speaking English, he spoke English, he had spoken English, he was speaking English, he had been speaking English, he will speak English, he will have spoken English, he will be speaking English, he will have been speaking English। और अब कुछ एग्जाम्पल एक्सिलरीज की। He can speak English, he should speak English, he could speak English, he would speak English, he must speak English। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छी सा कमेंट कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।